Good mornings. Today's topics are friend real analysis or continuity and differentiabilities questions. Say related say first lectures is also uploaded here. This second lecture question number 6, 7, 8, 9 and 10 is very important and logical questions here taken है और ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आते हैं हमारे चाहे गेट दे सेड आंसर नेट दे टीम से जैम देना है आपको every that type of question ask the problems so is very important and technicals. So now come correct here is fx is a continuous at x equal to 0 so that f of 0 is equal to 2 so that is what it is. तो एवरीवन इज नो जब एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है तो जो एफ ऑफ जीरो के इक्वल्स होगा दैट इज एफ ऑफ जीरो जो भी वैल्यू होगी वो लिमिट्स की वो एफ ऑफ जीरो के इक्वल्स होंगे सो दैट केस इज हियर मींस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड जीरो टू एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो simple that is a so that is how to find out this simple this is apply DUIS yeah apply first L'Hospital's rules here apply L'Hospital apply L'Hospital's rules derivative of numerator and derivative of denominators that is f of 0 already that is the 2 here is apply f dash DUIS that is apply DUIS apply the DUIS so then we get the first partial derivative inside of this and फिर plus derivative of here this is मतलब 0 to x del by del x ft dt plus value of function with upper limit is the value of function is upper limit into derivative of this means only this is the f of x minus 0 जाएगा आपका that is 1 this is f of 0 so this is with respect to x it means that value is 0 only this is f of x is equal to f of 2 this is f of x is equal to f of 0 this is f of x is equal to f of 0 already given f of x is already given so that case is 2 so that option is true another is wrong okay is very logical and concept problems हाँ तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में आप तो ध्यान में रखेंगे नेट में भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं सो जनरल अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हो तो आप उनको DUIS फर्स्ट L'Hospitals and then you can apply the DUIS differentiation under integral sign method then you can solve the problems so take care. नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज अ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल एंड समथिंग्स दैट इज द गिवन तो पहला वर्क है कि हमें कंटिन्यूअस चेक करना है फिर गो टू द डिफरेंशिएबिलिटीज तो कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे आप दैट इज इंपॉर्टेंट कि हाउ टू चेक द कंटिन्यूअस फंक्शन देखते हैं here limit x tending to 0 f of x ये माइनस होता है फॉर कॉन्टिन्यूअस is equal to limit x tending to 0 plus f of x is equal to limit x tending to 0 f of x ये तीनों जब इक्वल्स हैं दैट इज द कॉन्टिन्यूअस एवरीवन इज नो सो दैट केस से हाउ टू चेक इट्स सिंपल दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो 0 माइनस मतलब ये आ जाएगा आपका दिस इज 0 इक्वल टू 0 है तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब सिर्फ एक ही ये मिलेगा हमारा दैट इज हियर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है समथिंग आ रही बात सो दिस इज लिमिट ऑफ
sorry, sin x square upon x. Here is also limit x tending to 0, sin of x square upon x, or f of 0 means 0, that is f of 0. Okay, this is f of 0. अब here is this, तो लिमिट इट कैन बी अरेंज कर लीजिए आप सिर्फ sin of x square upon x square into x. अरेंजमेंट इस x से मल्टीप्लाई करके हम अरेंजमेंट कर लेते हैं here, एंड दिस इज limit of x tending to 0, again sin of x square upon x square into x is equal to f of 0. This is 0 already given है, f of 0 is 0, that is here. अब which is 1 means 1 into 0, here is 1 into 0, that is 0 means 0 0 and 0. So fx is the continuous. पहला कंडीशन हो गया कि fx is continuous. fx is continuous. ठीक, अब fx is the continuous. अब नेक्स्ट वर्क है कि चेक द डिफरेंशिएबल आर नॉट. इज इंपॉर्टेंट कि चेक द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल आर नॉट. तो चेक कर लेते हैं. So function is differentiable. F dash x is equal to, everyone is equal, limit x tending to 0, f of x minus f of 0 upon x minus 0. That is a differentiability condition. If exists, so that is a continuous, a differentiable. So now check it. This is limit x tending to 0, sin of x square upon x minus 0 upon x. So limit of x tending to 0, sin of x square upon x square, that is 1, means exist. So fx is differentiable. So fx is differentiable. अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल at x equal to 0, at x equal to 0, that is neither, that is wrong. continuous है but not derivable, ये भी wrong क्योंकि ये differentiable है, और ये that is wrong. So first option is correct. Function is continuous and differentiable. So that case is, take case is a very important topics. अब हम आते हैं next problems की तरफ. Next problem is here. Sorry, this is a f of x already is given. अब बहुत ही important है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स है फ्रेंड. तो इसको हमें समझने की कोशिश करनी है कि क्या है gx is equal to x f of x where is given f of x is equal to this, and calculate this. gx is differentiable but g dash x is not continuous. gx is differentiable while fx is not differentiable. Both fx g are differentiable and none of these is very important. तो पहला वर्क है कि हम gx के अबाउट वर्क कर लें. तो that is given. What is your find out the gx? gx is important. तो first you find out the gx. x f of x. So x f of x is given है. तो x f of x में हमें क्या करना है, ये चेक करना है आपको. This is f of x, f of x. So here put the value of this. तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर. दिस इज पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. दिस इज x इज नॉट इक्वल टू 0, हियर 0, x इक्वल टू 0. दैट इज क्लियर. तो अब हमें अकॉर्डिंग टू दिस वर्क करना है कि ये फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं. हम इसको चेक करना है कि विच इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, डिफरेंशिएबल और नॉट. पहला वर्क डिफरेंशिएबल, g डैश इज कॉन्टिन्यूअस. g पूछ रहा है gx इज डिफरेंशिएबल बट g डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. तो पहले हमको gx को चेक करना है कि विच इज द कॉन्टिन्यूअस है और नॉट. इंपॉर्टेंट है बहुत ही. तो पहले हमें g डैश x के लिए वर्क हम कर लेते हैं, तो उसके बाद ही वर्क दूसरा कर पाएंगे. सो टेक केयर दिस.
take care, this is g dash x. G dash x is okay. So g dash x क्या हो सकता है ये फाइंड कर लेते हैं पहले. So now friends, g dash x is here arrangement. Now तो देख लेते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 gx g of 0 and x minus 0, that is a arrangement. Clear. तो gx g0 और x minus 0, तो अब इनको हम कैलकुलेट करना है हमें. तो g of 0 तो 0 होगा, ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 0 बट इज हियर. सो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x square sin of 1 by x upon x, this is cancel. Limit x tending to 0 x sin 1 by x is a very important, that point is a very important है. देखिए क्योंकि what is this, here is limit x tending to 0 x into, this is an oscillating function, this is an oscillating this is a 1 minute friends. Oscillating numbers lie between oscillating numbers lie between -1 to 1. That is हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, that is very important, that is the oscillating numbers, ऐसा बहुत ही यूज होने वाला है. So that is a very important point here. This is oscillating numbers lie between -1 to 1. मतलब कोई वैल्यू फाइंड आउट होगी, दैट इज हियर क्लियर, दिस इज कोई वैल्यू आपको फाइंड आउट होने वाली है. सो दैट इज हियर इज एन ऑक्सिलेटिंग नंबर्स बिटवीन -1 to 1. तो इट मींस दैट इज ये फाइनाइटली एग्जिस्ट होगा. x इक्वल टू 0, यहाँ पे हम 0 भी कर सकते हैं या फाइनाइटली एग्जिस्ट, नो प्रॉब्लम. सो दैट केस इज हियर इज फाइनाइटली exist. So finitely exist means या something is 0 भी आप राइट अप कर सकते हो. It means gx is the continuous, gx is differentiable. Okay, gx is differentiable, gx is differentiable. अब वर्क है gx is differentiable, that part is clear. कह रहा है कि g dash is continuous or not, g dash x is a continuous or not, वो चेक करना है हमें. तो पहले इसके लिए हमें g dash x फाइंड करना होगा और उसके बाद हम कंटिन्यूअस चेक कर सकते हैं. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द g dash x, ये डेरिवेटिव चेक करने का मेथड्स है. अब हमें करना है g dash x इज द कंटिन्यूअस और नॉट. सो g dash x, फर्स्ट यू फाइंड आउट g dash x. So go to this g dash x, find out this. So that case is here u into v rules, x square into cos of 1 by x into minus 1 upon x square. Okay, derivative of first into second plus sin 1 by x, that is the derivative. So clear, and x square, this is 2x. So that value is cancels. So g dash x is equal to 2x sin 1 by x minus cos 1 by x. That value. So अब हम कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लें, that is here. So first चेक कर लेते हैं, पहले फाइंड करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 g dash 0 g dash x. तो लिमिट x tending to 0 here 2x sin 1 by x, no problems, minus limit x tending to 0 cos 1 by x. This is, take care.
तो अभी क्या करना है हमें, देखिए दैट इज द एग्जिस्ट नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये sin 1 by x इज ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है, लाई बिटवीन 1 to 1, दिस इज हियर मींस लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 to x into this is oscillating number, minus 1 to 1, lie number minus 1 to 1, that is we get finite, but which is does not exist here, which is does not exist, which is does not exist. Okay, this is cos 1 by x is does not exist. Simple, this is a limit x tending to 0. In minus 1 by 1 to 1 is also, but this is oscillating function होगा, कौन सी वैल्यू क्या होगी वो डिसाइड नहीं कर सकते, that is not fixed है. तो this is other my observations, so that which is does not exist is here. तो the when that is which is does not exist, limit x tending to 0 g dash x is does not, sorry, so g does not exist, it means क्या हो गया आपका g dash x is not continuous. तो it means g dash x is not continuous means first option, so कोई problems नहीं है, that is the correct. अब हम आएंगे according to works, this is the f of x, जो f dash x है वो important है चेक करने के लिए. देखते हैं f of x, about f of x भी कह रहा है कि gx डिफरेंशिएबल है, gx डिफरेंशिएबल होगा while fx is not differentiable and so on. So fx के about वर्क कर लेना हमें. gx, so how to check it, this is differentiable or not? Here simple, general, f dash x is equal to limit of x tending to 0, f of x minus f of 0 x minus 0. Okay, that is a checking methods, we check it. So limit x tending to 0, x sin 1 by x minus 0 upon x, so that this cancel, limit x tending to 0 sin 1 by x, or which is does not exist, क्योंकि ये ऑक्सीलेटिंग फंक्शंस हैं. तो fx मींस क्या हो गया कि f dash is not, fx is not डिफरेंशिएबल वर्क है, कॉन्टिन्यूअस कहीं पे पूछ नहीं रहा है, तो इट मींस आगे fx is not differentiable. ओके, fx is not differentiable, बट हम अगर कंटिन्यूअस चेक करें तो दिस इज द कंटिन्यूअस, fx is a continuous at x equal to 0, fx is continuous at x equal to 0. आप चेक कर लीजिए, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स, राइट हैंड साइड लिमिट्स एंड वी गेट द f of 0, 0 0 फाइंड आउट होगा, सो दैट इज अ कंटिन्यूअस. तो check its differentiable, gx is a differentiable while fx is the continuous, fx is not differentiable, so that is a correct, both wrong and this is the wrong, so first two option is correct. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको कंफ्यूजन्स चेक करना है और आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो थोड़ा माइक का जो कि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, सो देखेंगे मैं कैसे कैसे एडजस्टमेंट होगा धीरे धीरे. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रेंड्स, दिस इज गो टू दिस. तो पहले मैं ये करना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करूंगा.
उसके बाद फिर इस पर आए जाएंगे। तो कह रहे एफ एक्स इज इक्वल टू इज गिवन है, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 by x is equal to 0 not equal to 0 0 x equal to 0। तो अब fx और f dash x are continuous not fx is differentiable at x equal to 0 fx is derivable f dash is not continuous at something। तो पहला वर्क है कि हमें चेक करना है कि fx is the continuous है कि नहीं है। if fx is continuous then go to the another fx f dash x is differentiable है कि नहीं है वो चेक करना है। तो हम वन वन चेक करेंगे और देखेंगे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गो टू द वन वन ऑब्जर्वेशंस हियर। फर्स्ट fx इज डिराइवेबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। fx एंड f dash x continuous some things। तो how to check fx is continuous f dash x, ठीक है। देखते हैं पहले f dash x पे आ जाते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके, x टेंडिंग टू 0 हियर f of x minus f of 0 upon x minus 0, so limit x tending to 0, okay, this is x square sine of 1 by x upon x, that is cancel, limit x tending to 0 x sine 1 by x, so that is limit x tending to 0 x into this is an oscillating number minus 1 to 1, so it means finitely exist, finitely exist means fx is differentiable, so fx is a differentiable है, it means the fx differentiable होगा तो fx is continuous भी होगा, ठीक है। fx is differentiable, so that case fx is the continuous at x equal to 0, so that is clear है कि every differentiable function is a continuous means fx is differentiable at x equal to 0, so fx is continuous at x equal to 0, that work is finished। अब चेक करना है दिस इज fx is derivable, ये फाइंड आउट हो गया, चेक हो गया। अब अगर fx is derivable at x equal to 0 but f dash x is continuous at x equal to 0, अब हमें f dash x को चेक करना है कि which is the continuous or not। तो f dash x को कैसे करेंगे हम, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट f dash x को फाइंड आउट करना, आफ्टर देन चेक आउट दिस। तो फर्स्ट वी चेक आउट दिस, फर्स्ट वी फाइंड आउट f dash x, is important कि find f dash x, so f dash x is here, find out this x square into derivative of this portion, so derivative of this portion we here sine cos 1 by x into minus 1 upon x square plus 2x और sine 1 by x, so that this cancels, 2x sine 1 by x minus cos 1 upon x, this is f dash x। अब f dash x से इसको चेक कर लेना है कि which is the continuous, तो पहले हम चेक करेंगे कि at point x equal to 0 पे ये एग्जिस्ट होता है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट है तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट्स में क्या वर्क हो सकता है, इज इंपॉर्टेंट। तो चेक किया दिस इज लिमिट ऑफ x tending to 0 f dash x is equal to limit x tending to 0 2x sine 1 by x minus limit x tending to 0 cos 1 by x, so which is does not exist, which is exist, ठीक। so it means
लिमिट x tending to 0 f dash x does not exist. It means f dash x is not continuous. So f dash x is not continuous. तो अब चेक कर लेते हैं here f is derivable at x equal to 0, that is true. Fx is derivable at x equal to 0 and f dash is not continuous, so that is also true. f dash x is derivable at x equal to 0, क्योंकि ये continuous ही नहीं है तो derivable कैसे हो सकता है? Simple है, this is not continuous, so how to can say this is a derivable? पहले derivable है तो continuous होगा, बट विच इज द नॉट कंटिन्यूअस है तो ये डेरिवेबल भी मतलब डेरिवेबल फंक्शंस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शंस नहीं होगा, क्योंकि अगर f dash इज डेरिवेबल एट वेयर f dash इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0, f dash x के बारे में पूछ रहा है, f dash x, तो f dash x मतलब ये हुआ, बट विच इज नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, दैट इज क्लियर. सो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्रॉब्लम्स को, तो जनरल ये मेथड्स आपको ध्यान में रखने हैं और इसको ऑब्जर्व करना है. अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ. दैट इज 7 नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल क्वेश्चंस. सेम वर्क कह रहा है कि लेट दिस इज गिवन x इक्वल टू समथिंग, तो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ दीज. तो पहला वर्क चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. तो लिमिट एवरीवन इज नो f dash x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x tending to 0 fx minus f of 0 divided by x minus 0, already given है, this is, that means limit x tending to 0 x raised to n sin 1 by x upon x, limit x tending to 0 x raised to n minus 1 sin 1 by x. ठीक है, this is, so which is exist, no matter this is which is exist, but where which is exist but conditions n minus 1 is greater than 0, n minus, but यहाँ पे मतलब ये प्रेजेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर्स के लिए जब आ जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं होगा, दैट इज क्लियर. सो दिस इज एग्जिस्ट, इट मींस इज n is greater than n is greater than 1. तो फंक्शन इज एग्जिस्ट जब when n is greater than 1, and here which is first, which is does not exist, which is does not exist when n minus 1 less than 0, n minus 1 less than 0, that case which is not exist, मतलब n less than 1 at x equal to, which is does not add here at 0. so it means क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि दो वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, लेस देन के लिए अलग वैल्यू है, ग्रेटर देन के लिए अलग वैल्यू है. सो इट मींस क्या हुआ कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्लियर. सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 0, that is clear. fx is not differentiable at x equal to 0. ओके, अब हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, मतलब fx इज डिफरेंशिएबल है, ये तो कैंसिल हो गया, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, और इन दोनों ऑप्शंस में हमें अभी चेक करना है. तो fx इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, ये चेक करना है. तो अब कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्क कर लेते हैं, देखते हैं.
आइए लिमिट, तो लिमिट फॉर कॉन्टिन्यूअस, सो लिमिट x माइनस पहले आ जाते हैं, माइनस पे वर्क कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स में, लिमिट sorry so h tending to 0 f of 0 minus h, this is limit of h tending to 0 or 0 minus h raised power n sin 1 upon 0 minus h, simple. So limit of h tending to 0 minus h raised to n here, और तो माइनस कर लिया sin 1 by h, no problem, it is limit h tending to 0, ठीक है, माइनस और माइनस तो कुछ भी हो जाएगा आपका, बट दिस इज h raised to n, ठीक, माइनस 1 raised to n प्लस 1 कर सकते हैं, sin 1 by h कर सकते हैं, so that is the exist, clear, h into something है, so that is exist here, मतलब आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन दिस इज एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब ये टोटली एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट फाइनाइटली, exist finitely, so exist when finitely, then we can say that is your, that value is 0 because 0 into something है ना, so that is a 0, क्योंकि 0 into जो भी ये फंक्शन मिलेगा that value is here, this is value, मैंने बोला this is the oscillating function, this is the oscillating number, sorry number, so minus 1 to 1, तो जब when 0 into something then we get 0 into something, so we get the 0, clear, 0 into something है, so that case here oscillating numbers है, that case we get the 0, left right hand sides limit of x tending to 0 plus f of x is equal to limit of h tending to 0 h raised to n sin 1 by h, so that is also 0. Similarly, then we can say that is value already 0. So left hand side, right hand sides, this is here also equals. So it means क्या हुआ कि fx is a continuous. At x equal to 0. So clear? तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऑब्जर्व करना है और टेक केयर करना है. सो देखिए बहुत ही मतलब fx is continuous x equal to 0, that is wrong. तो बट जो मेन इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स कि हियर दैट इज exist or does not exist something, मतलब लास्ट में हम एक पॉइंट्स को मैं बोल सकता हूँ कि गिवन हो मतलब x raised to n sin 1 by x, और दिस इज सपोज दैट इज लिमिट x tending to 0. तो कहने का सेंस ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट हियर एवरीवेयर, बट ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा वो हमें पॉइंट टू पॉइंट चेक करेंगे. सो चेक केस इज फॉर दिस इज कॉन्टिन्यूअस व्हिच इज continuous at x equal to 0 all times, ठीक है, this is always true which is continuous at x equal to 0, but n is greater than, यहाँ पे भी कंडीशन होगी n is greater than 0, ठीक है, which is continuous यहाँ पे भी हो जाएगा that is here, but this is n is greater than 0. तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखने की पॉइंट्स हैं. दिस इज n इज ग्रेटर देन 0, नॉट लेस देन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, आपको ये टारगेट ध्यान में रखिए. दिस इज नॉट लेस देन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं पॉसिबल सर, बट n इज ग्रेटर देन दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके क्लियर. सो इस तरह से हमें ऑब्जर्व करने हैं. तो दिस इज द कंटिन्यूअस फॉर
which is continuous at x equal to, but is here n is greater than, condition दे दी कि n is greater than 0, less than n is less than 0, that is no, which is not continuous because the function जो given होगा it does not exist. Clear? Another is the most important things है, अब x sin 1 by x है, तो x sin 1 by x which is also continuous, x square sin 1 by x is also continuous, but differentiable नहीं है, वो आपको चेक करने होंगे. So 1 by 1 प्रोसेस है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपको ऑब्जर्व करना है, सॉल्व करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में मिलते हैं. सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.